Hello, engineers. So, in this session, we will see how we can model the podiums in our ETABS. Previously, we have seen how we can model the service level. So, up till now, I think the drafting has, the modeling has been cleared. Now, we will try to model this podium floor, which is on the second and the first level. Okay, which is the basic purpose of this is, as we have seen, it is used for parking. तो अभी हमको ये फ्लैट स्लैब सिस्टम में ड्रॉप इसको हमको मॉडल करना है. वी हैव 250 mm थिक स्लैब एंड द ड्रॉप साइजेस आई विल टेल यू कि हमको ड्रॉप का साइज कितना लेना है एज पर आईएस 456. इट शुड बी एटलीस्ट 1.25 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द स्लैब. तो हमारा ड्रॉप कम्स आउट टू बी 250 into 25 more 1.25. So the drop size around 312, we will consider 350 thick drop. And as per the requirement of punching and negative moment, we will design this drop panel and flat slab also. Okay. So the procedure for importing in the ETABS is same as we have seen on the upper floors. If you have not seen, you can watch the previous sessions. So what I have done is मैंने क्या किया है कि यहाँ पे हर एक जो फ्लैट स्लैब मेरा है और ड्रॉप है. फ्लैट स्लैब तो हम डायरेक्टली से ई टैब में मॉडल कर लेंगे, बट जो हमारा ड्रॉप है उसके अंदर मैंने क्या किया है, एक लाइन बना लिया है सच दैट कि मेरे को ड्रॉप का टेंटेटिव लोकेशन ई टैब्स में मिल जाए. दैट्स इट. और जो एडिशन कॉलम्स है, दिस पोडियम कॉलम्स, आई हैव डन अ क्रॉस मार्किंग ओवर हियर सो दैट आई कैन गेट द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस कॉलम एंड ई टैब्स में मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ मेजरिंग इन ई टैब्स. इट इज द इजीएस्ट वे. नाउ क्या करेंगे, आई विल जस्ट कंट्रोल सी एंड आई विल टेक इट टू द मॉडल वन. ओके. बिफोर दैट इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा. इट शुड बी, आई वुड से, अ पोडियम लेवल. ठीक है. नाउ अभी ये जो भी प्रॉपर्टीज है, आई हैव गिवन अ प्रॉपर्टी ऑफ बीम अंडरस्कोर बार. आई विल गो राइट क्लिक, सिलेक्ट सिमिलर. सिलेक्ट सिमिलर करते ही ये सारे जो भी प्रॉपर्टीज है वो सिलेक्ट हो जाएंगे. देन आई विल जस्ट एम एंटर मूव करेंगे. Select this reference point, center of this lift, and here reference point, this is the center of this lift. ठीक है. I will press F8 so that it will okay. तो ये हमारा यहाँ पे ये प्लान रेडी हो गया है. ठीक है. Now this is not required, so we can delete this part. Now अभी ये जो center columns है already we have model in the upper floor, so it is not necessary to again import this part. So हम उसको क्या कर सकते हैं, you can easily delete all this extra portions. ठीक है. This I will be deleting. So I hope that all the repeated columns has been deleted. Now उसको आपको क्या करना है, सेव करना है DXF फाइल में. फाइल सेव एज, I will just go to DXF 2004 or 2002. I will go podium level and I will just save it as the DXF file. Now उसके बाद हमको उसको क्या करना है, बंद कर देना. That layer should be beam bar. हमको beam bar select करना है ETABS में. उसको मैं सेव एज करके बंद कर देता हूँ. Okay. Now I will go to the ETABS. अब जैसे हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स देख रहे हैं, इन स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स वी डू नॉट रिक्वायर द बीम्स फ्रेमिंग एज वी हैव रिक्वायर्ड इन द अपर फ्लोर. अपर फ्लोर में हमको जैसे बीम्स रिक्वायर्ड थे मिडल पोर्शन में, वैसे हमको पोडियम लेवल में अभी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो नाउ अभी हमने रेप्लिकेट जैसे किया था फॉर अपर स्टोरीज, टिपिकल फ्लोर और सर्विस फ्लोर, हम क्या करेंगे, ओनली वी विल ट्राई टू रेप्लिकेट द शेयर वॉल्स. फॉर दैट यू हैव टू गो सिलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टाइप्स. वॉल को सिलेक्ट करना है ओनली. I will press, you can press the shortcut command Shift Control J, or you can press right click, show selected object only. उसके बाद में क्या हो जाएगा, only this column would be get selected. Now इसको I will just select only the columns. I will press Control R and then ये podium पे इसको मेरे को import कर देना है. ओके. तो ये हमारे कॉलम पोडियम पे इंपोर्ट हो गए. अगर मुझे देखना है सारे ऑब्जेक्ट्स, तो आई विल प्रेस शिफ्ट कंट्रोल ए. जिससे मैं शिफ्ट कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स इज विजिबल नाउ. ठीक है. अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ जो DXF फाइल आई हैव मेड फॉर दिस पोडियम लेवल. फॉर इंपोर्टिंग द प्रोसीजर वुड बी सेम. फाइल इंपोर्ट डॉट DXF फाइल ऑफ फ्लोर प्लान. इसको मेरे को इंपोर्ट करना है. आई विल जस्ट गो टू DXF एंड this podium level.
Now the property of beam I will select such that it can be easily deleted. तो मैं इसके लिए ISWB ISLB select कर लूँ because after my modeling मतलब slab and जो भी मेरा drops और columns model करने के बाद मुझे delete करना रहेगा. So I do not have to go and select each and every. मैं क्या करूंगा डायरेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में से ISLB 600 के जो भी प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करके एट वन टाइम ओनली आई विल डिलीट एवरी पार्ट दैट आई विल शो यू. मुझे क्या करना है बीम में आके बीम बार को सिलेक्ट करना है. यस बीम बार को सिलेक्ट करना है. ISLB 600 फॉर जस्ट फॉर रेफरेंस यूज का सेकेंड पोडियम. ओके. If you require this ETABS, you can WhatsApp me on the number shown on the screen. ठीक है. I will try to model all this part. Now, what are columns also? Define section properties, frame section. अगर हमारा column model नहीं है तो हमको column भी model करना पड़ेगा. तो I will go add a copy of sizes of the column is typical, but let's see what is the size. हमारा column का जो size है it is about 300 cross 900. ठीक है. So I will go define C 300 cross 900 dot M 45. 45 is the grade of column. Okay. Now depth 900 है. Width हमारा है 300. 300 is the minimum depth, minimum width of the columns in the seismic resistance structure that we will see when we'll be dealing with the concepts of earthquake engineering or when we are going to see the ductile detailing clauses. तो हमको अभी as for now we can say हमको minimum 300 और 20 times the diameter of the bars in beam. ये हमको याद रखना है. इतना मिनिमम साइज हमारा होना चाहिए. ठीक है. नाउ द इन्फोर्समेंट में आके हमको यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करना है. HYSD 400 confinement bars can be HYSD 500. The provision for 415 is only in the beams. हम कॉलम में टाइस 500 ले सकते हैं. ओके. देयर इज नो प्रोविजन ऑफ 415 इन कॉलम लिंक्स. ठीक है. इसको ओके कर देते हैं. नाउ सबसे पहले हम कॉलम मॉडल करना देख लेते हैं फटाफट. नाउ यहाँ पे वी हैव ऑप्शन ऑन द लेफ्ट साइड ड्रॉ क्विक ड्रॉ कॉलम. क्विक ड्रॉ कॉलम के बाद में द डिजायर्ड प्रॉपर्टी इट इज अबाउट 300 क्रॉस 900. और हमको क्या करना है जो भी जंक्शन है ये जंक्शन पे हमको प्लेस करना है. इट इज नॉट सिलेक्टिंग ऑन द जंक्शन. हमको क्या करना है राइट क्लिक स्नैप ऑप्शन इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन पे हमको अप्लाई करना है. जैसे हम अप्लाई करेंगे देन नाउ वी कैन इजीली सिलेक्ट ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट. ठीक है. तो ये इंटरसेक्शन पे हम इसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं. रिमेम्बर इट शुड बी ओनली एट दी वन फ्लोर. हम उसको रेप्लिकेट कर देंगे बिकॉज घड़ी घड़ी रेप्लिकेट करना है एंड मॉडल करना है. इट वुड टेक टाइम. नाउ फॉर 90 फॉर वर्टिकल इट इज इजीली प्लेस. हमारे जो कर्सर में दिख रहा है आपको तो इट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी कैन प्लेस. नाउ फॉर वर्टिकल वी हैव टू चेंज द डिग्री टू 90. ठीक है. 90 डिग्री प्लेस करने के बाद में विल जस्ट प्लेस एट द इंटरसेक्शंस. वी हैव टू certain adjustment because जो फ्रेम एलिमेंट होता है कॉलम जो इट इज अ फ्रेम एलिमेंट एंड इन ETABS we only get connectivity at the center of points. So basically it is a rigid connection. बट लेकिन अगर हम ETABS में देखते हैं तो इफ आई विल ड्रॉ अ बीम ओवर हियर जैसे मैं शेल के मिड पॉइंट से बीम बनाता हूँ so my beam would be on the edge. इस पर ड्राइंग इट इज करेक्ट बट हमारे ETABS ये सेंटर लाइन को ही कंसिडर करते हैं. तो हमको कॉलम्स जो है ना उसको एटलीस्ट ये सेंटर लाइन को है यहाँ पे हमको शिफ्ट करना पड़ेगा एट दी बॉटम सो दैट दिस बीम विल गेट रिजिडली कनेक्टेड टू द कॉलम जॉइंट. दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड. पहले हम इसको ड्रॉप्स वगैरह को मॉडल कर लेते हैं. देन ओनली वी विल शिफ्ट द वी विल डू द एडजस्टमेंट. नाउ कॉलम्स मॉडल करने के बाद में वी रिक्वायर टू मॉडल दिस ड्रॉप पैनल्स. ओके. तो हमको क्या करना पड़ेगा डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज एंड स्लैब सेक्शन में आके हमको एक ड्रॉप का प्रॉपर्टी डिफाइन करना है. विल गो टू एड न्यू प्रॉपर्टी. आई विल जस्ट नेम इट एज द ड्रॉप
350. ओके, तो यहाँ पे हमको M30 करना है, शेल थिन, इट कुड बी स्लैब, और यहाँ पे हमको 350 को सिलेक्ट करना है ना. हाउ दिस 350 कम इज the drop thickness should be at least 1.25 times the slab thickness, flat slab thickness. Now my flat slab thickness is 250. I will go 1.25 into 250. It is coming around 312. So on round off, I'm giving the drop thickness to be 350. Now, according to depend upon the requirements of punching and the negative moment, we will revise the depth of the ड्रॉप पैनल. ठीक है, तो अभी मैंने इसको डिफाइन कर दिया. नाउ वी विल जस्ट मॉडल दिस ड्रॉप पैनल इन आवर ईटैब्स. आई थिंक इन importing we have the errors. लाइक हमारा दो लाइन इंपोर्ट हो गया एक्चुअली. दैट वी विल update it, not a big issue. I will just quickly model all this drops in our tabs to save the time. Now, in this case, as we can see in the structural plan, we have missed this column. So how what we can do now is we can simply again import this single column, or we can directly model it in our ETAB itself. Now first I will measure the center to center distance. What is the distance between these columns? It is 1.8 meters roughly around, and we'll just take a line of 1800. Okay. So with reference to this drop panel, because this drop panel is actually on our ETABS, तो हम उसको 385 हमारा नीचे जा रहा है. So I will just shift select this, control extend apply. Now I will go, मुझे 385 और चाहिएगा ऑफसेट, तो आई विल गो प्लान ऑफसेट. इट शुड बी 385. 385 हमारा ऑफसेट लेना है यहाँ से. ओके, now the length of this wall, it seems to be around 1.5 meters, so we will take it to the 1.5 meter. I will select this, I will control R, एंड इसको मैं रेप्लिकेट कर दूंगा 1.5 मीटर्स पे. ओके, सो ये हमारा जो लाइन बनेगा, ये मेरा वॉल का मुझे रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा. अगर कोई कॉलम या कुछ वॉल हमारा इंपोर्ट करते टाइम इफ वी हैव मिस्ड, इट इज नॉट अ बिग वरी. हम उसको इजीली, एज वी हैव सीन द मॉडलिंग कमांड्स वेरी वेल, हम इसको इजीली मॉडल कर सकते हैं. ओके, this my wall has been modeled at its exact location which it is meant to model. तो ठीक है. नाउ फिर उसके बाद मैं जस्ट द फ्रेमिंग हैज बीन रिमेन, हमारा जो फ्रेमिंग है वो अभी बाकी है. तो सबसे पहले आई विल जस्ट डिलीट दिस अननेसेसरी बीम. हाउ वी कैन इजीली डिलीट? आई विल गो टू सिलेक्ट प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शन. नाउ
इनिशियली हमने जब आई एस एल वी आई एस डब्ल्यू बी दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट किया था, द रीजन फॉर इट इज हम इसको जिसे भी सिलेक्ट करेंगे ऑल दिस अनवांटेड प्रॉपर्टीज विच वी हैव टेकन वी कैन बी इजीली सिलेक्टेड, और इसको हम डिलीट कर देते हैं. सो ओनली द important part of the model has been remained, other thing has been deleted. ठीक है. You can also select the none beam also in that case, but I have selected the ISLB. ठीक है. Now I will just we have to do some modification or some जुगाड़ in our model. Now हमको क्या करना है? We'll just first model the beam size randomly, then as per the layout we will try to modify. Now क्या करना है? जैसे अभी ये सिलेक्ट करके हम इसको एक्सटेंड कर देंगे ना. अभी फ्रेम एलिमेंट का वी हैव ओनली अ जॉइंट कनेक्टिविटी. शेल में हम इसको किधर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको रिजिड कनेक्शन बनाना तो इट शुड बी एट दी जॉइंट. दिस बीम शुड बी कनेक्टेड एट दी जॉइंट. लेकिन हमारे यहाँ पे हमको एक केस मिल नहीं रहा है, तो हमको कॉलम को थोड़ा शिफ्ट करना है. इफ इट इज अ लिटिल बिट वी कैन शिफ्ट दिस कॉलम टू अटेन द रिजिडिटी ऑफ द जॉइंट्स. We can also model the rigid link between them, but it would be sometime it gives warning. So it is better कि हम थोड़ा कॉलम को शिफ्ट कर ले. It will not make as such इतना कुछ डिफरेंस. ठीक है. तो इट इज अबाउट 0.3352. तो हमको ये कॉलम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है. वेल को कंट्रोल एम मूव 0.3352 माइनस 0.3352. दिस कॉलम हैज बीन मूव टू इट. अभी हमको देखना है ये बीम का जॉइंट एंड कॉलम का जॉइंट मैच होना चाहिए. हाँ, ठीक है. जैसे ये जॉइंट हो गया हम इसको क्या करते हैं, रीशेप कर देते हैं. सो दिस बीम इज रेस्टिंग ऑन दिस जॉइंट परफेक्टली नाउ. ठीक है. आई विल जस्ट मेक दिस एंटायर बीम कनेक्टिंग टू इट. As we can see over here, there is same issue over here. So हमको ये कॉलम को भी कुछ पॉइंट से शिफ्ट करना पड़ेगा. दैट वी विल सी कि हमको कितना शिफ्ट करना है. अनदर मेथड आपको शिफ्टिंग का मैं बताता हूँ. जैसे मूव करने से और एक ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है. वी कैन नोट दिस पॉइंट. हम यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, इसका पॉइंट नोट करते हैं. इट इज इन दी वाई डायरेक्शन. ओके. एक्स डायरेक्शन से बिकॉज वी हैव टू शिफ्ट इन वाई डायरेक्शन, तो हमको इसको वाई डायरेक्शन नोट करना है. ओके. नाउ अभी मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ये पॉइंट को सिलेक्ट करके दिस अलाइन ज्वाइन कमांड शिफ्ट कंट्रोल एम आपको प्लेस करना है. और अलाइन में जाके यहाँ पे वाई में आपको इसको प्लेस कर दोगे द लोकेशन ऑफ दिस जॉइंट, तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम अलोंग विद दिस वुड गेट शिफ्टेड. आई थिंक देयर इज सम एरर. जस्ट अ सेकंड. 6.3. There is some issue with this command. Okay, so we will try our regular procedure. और हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट करके we can simply remodel that column in that position. Okay, it is also one of the ways. I think this way would be much easier than replicating many times. Hmm. So this extra columns and all we have model. There's a slight shifting in the position of columns, so that we have model in our ETABS. Now this part is remaining. तो हमको क्या करना रहेगा? We'll just draw a straight line. I'm just randomly modeling this beam because afterwards हम इसको the property of the beams can be easily changed, as we all know.
After these sessions, we'll try to figure out the releases concept. What is the release concept? We have uploaded one session previously. Uh, you can watch that as well for releases. Even though for this high-rise structure, we will also try to cover up that. Now, this, as you can see, this drop is somewhat like uneven shape. So we will have to just adjust this drop as well. तो हमको क्या करना रहेगा ड्रॉप के लिए? ड्रॉप के लिए we will try this command. हमको इसको सिलेक्ट करके ड्रॉप के पॉइंट्स को we'll just move it off. 300 mm, हमको 300 mm ड्रॉप को नीचे मूव करना पड़ेगा from both the sides. So we'll just select this, Control M, is minus 0.3. तो 300 mm को ड्रॉप्स को बॉटम में शिफ्ट करना है. ठीक है. नाउ फॉर दिस पार्ट, दिस एक्स्ट्रा पार्ट, वी नीड टू अपडेट दिस. अपडेट करने के लिए हमको ड्रॉप को प्रॉपरली मॉडल करना है. दिस आर द जुगाड़ वी हैव टू डू बिकॉज ईटा में प्रॉपर हमको जैसा ड्राइंग्स में वैसा नहीं मिलेगा. इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल बट इट शुड नॉट डिफर मच. ठीक है. तो reshape command लेके I will just reshape it up till here. Okay. Now this extra part can be, we can delete this extra part. We'll select slab and this adjoining beam. Then यहाँ पे we have the command. We have command of divide shell, divide frame, cookie cut floor objects, extend करके उसको extend को uncheck करना है. तो this extra part would get deleted. ये हमारा delete हो गया. Now we have the reshape command over here. Reshape command से हम इसको select कर लेंगे. तो this drop as per our actual plan has been created. This is the actual structural plan drop and this is our ETABS का drop. This we have to create. Similarly for this also what we will do is हम उसको एक डमी लाइन बना के एक्सटेंड कर देंगे. नाउ ये रीशेप कमांड से तो हमको एक्सटेंड करना है. सिलेक्ट दिस, सिलेक्ट द शेल एंड द बोथ द बीम्स और हमको कुकी कट फ्लोर ऑब्जेक्ट्स में आना है. देन इसको डिलीट करके विल जस्ट रीशेप दिस. ओके. नाउ ये हमारा डायरेक्टली रीशेप नहीं होगा. वी हैव टू क्रिएट सम इंटरसेक्शन. इसके लिए आई एम क्रिएटिंग द बीम्स, जस्ट टेम्पररी बीम्स फॉर इंटरसेक्टिंग बीम्स एंड बीम्स एंड स्लैब जॉइंट. ठीक है. सो दिस स्लैब हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है. एंड दिस स्लैब आल्सो वी हैव टू शिफ्ट इट. शिफ्ट करने के लिए हमारे पास इंटरसेक्शन लाइंस चाहिएगा. इंटरसेक्शन लाइंस के लिए आई विल जस्ट ड्रॉ वन डमी बीम एंड कॉलम के सेंटर से एक बीम को हमको एक्सटेंड करना है. डिस्टेंस इज 0.115. तो कंट्रोल एम -0.115 और अप्लाई. हम इसको रीशेप भी कर सकते हैं इजीली बट ऐसे एग्जैक्ट हमको मॉडल करना है. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस स्टफ. ठीक है. दिस पार्ट हैज बीन मॉडल. हमको ये अभी फ्लैट स्लैब जो है ना, आई विल शो यू दी हाउ वी कैन मॉडल दी फ्लैट स्लैब. फर्स्ट आई विल जस्ट फटाफट से जो पेरिफेरियल बीम है उसको बना लेते हैं. देन वी विल ट्राई टू शो यू हाउ वी कैन
Now I will just show you the part of how we can model this flash lab. The remaining part I will model quickly and so that it would save time because it is a repetitive procedure. Uh, it is as simple as we are modeling this lab. Now हमको क्या करना है बीम को सिलेक्ट करना है नन बीम की प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है इट इज फॉर द रेफरेंस वी विल मैच दिस लैब ठीक है तो हमको क्या करना रहेगा हम मैं एक्चुअली एक सिंगल सिंगल सा लाइन क्रिएट करना है आपको अगर हमको ड्रॉप टू ड्रॉप मिलता है तो ठीक है एक नन लाइन हमको उसको पहले सिलेक्ट करना है ठीक है